Welcome to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your assignments. So today we are going to learn about different features of Microsoft Word. So first of all, we are going to learn what is a drop cap. As you all know, in your term planner, there is a topic that is ड्रॉप कैप. सो नाउ बेसिकली व्हाट इज ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप क्या होता है और हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे पास बेसिकली कुछ टेक्स्ट है. ठीक है, मैंने यहाँ पर, आप भी अपने डॉक्यूमेंट पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हैं या आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी और फाइल से लेके, सो दैट आप इसको अप्लाई कर सकें. सो ड्रॉप कैप बेसिकली होता क्या है or what is drop cap? A drop cap is the first character of your paragraph that made larger. ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये इस वक्त पैराग्राफ है तो इसका जो फर्स्ट करेक्टर है वो मेरे पास जो है, कोई भी लेटर है या कोई भी वर्ड है वो हाईलाइट होगा एज कम्पेयर टू द होल पैराग्राफ. ठीक है, या वो पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा होगा पूरे पैराग्राफ की निस्बत. हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इंसर्ट टैब, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ड्रॉप कैप. हियर यू कैन सी दिस इज ड्रॉप कैप. So what you have to do, simply you just have to click on this option drop cap and you have to choose the position. Like I'm just moving my mouse pointer here, as you can see the position of drop cap is automatically changing in your document. So if you will click on this option dropped, so अब इससे होगा क्या कि आपका जो है पैराग्राफ वो एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली. और आपके जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है, लाइक इफ आई विल मेक इट जूम, सो एज यू कैन सी द फर्स्ट लेटर इज ऑन. और अब इस फर्स्ट जो हमारे पास वर्ड है ऑन का फर्स्ट लेटर ओ को उसने कैपिटलाइज कर दिया है. ठीक है, अब ये जो आपके पास फर्स्ट वर्ड है ये बड़ा है बाकी पूरे पैराग्राफ की निस्बत. ठीक है, सो ये जो ड्रॉप कैप है ये बेसिकली हम कहाँ पर यूज करते हैं. तो बेसिकली आपने काफ़ी बुक्स देखी होंगी, लाइक अगर न्यूज़पेपर है या कुछ आर्टिकल्स हैं या वेब पेजेस हैं या इवन डॉक्यूमेंट्स में, और इसके अलावा जो हमारे पास स्टोरी बुक्स होती हैं उसमें. ठीक है, सो दिस ड्रॉप कैप इज बेसिकली यूज्ड टू ग्रैब अ रीडर्स अटेंशन. ठीक है, हम इससे बेसिकली रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए कि अगर कोई पर्सन है वो इस बुक को स्टडी करे, सो हम ये ड्रॉप कैप इजीली यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, लाइक अगर मैं अब इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ या इवन सिलेक्शन के बगैर ही हम क्लिक करें इस द ड्रॉप कैप एंड हेयर आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इन मार्जिन. सो इसका क्या मतलब है, आपके पास जो अब फर्स्ट लेटर होगा आपके वर्ड का वो आपके टेक्स्ट के या पैराग्राफ के बाहर आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये पोजीशन आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं आपका जो फर्स्ट लेटर है ये आपको कितनी लाइंस में चाहिए. ठीक है, लाइक यहाँ से आप नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज कर सकते हैं या उसको डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन चूज एनी पोजिशन. लाइक अगर मैंने अब यहाँ पर 7 पर क्लिक किया है तो आपकी जो ड्रॉप कैप ये पोजीशन है ये 7 लाइंस को कवर कर रही है. ठीक है, सो ड्रॉप कैप इज बेसिकली that feature which actually make larger your first character of your whole paragraph. ठीक है, taking up several lines of your text or the first few sentences of your paragraph. सो ड्रॉप कैप एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन ग्रैब द अटेंशन ऑफ रीडर. सो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ ड्रॉप कैप. Okay, now the next one is line spacing. You will also find this option in your term planner. What is line spacing? So basically line spacing is that feature where you can adjust the space between your lines. Like as you can see, I have here 1 2 3 4 5 6 paragraphs here. Okay, so I have 6 paragraphs here. This one is the 1, this 2 3 4 5 and 6.
So here you have six paragraph, so you can adjust the line spacing very easily. Like for example, I'm going to set the line spacing in this second paragraph. So simply what you have to do, you just have to select your paragraph or your sentences, click on this option, line spacing. Okay, so this feature basically increase the space between your lines. You can adjust the space, like if you want to increase the space between your lines, and if you want to decrease your space between lines, then you will use line spacing. Simply just have to click on this line spacing option, and by default the line spacing option is 1.15. Okay, so if I will click on this option of 1, so as you can see there is a less space between these lines as compared to the other lines. So इस पैराग्राफ में मैंने अब जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग है उसको चूज किया है 1, सो यहाँ पर स्पेस कम है एज कम्पेयर टू अदर पैराग्राफ। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं और इस ऑप्शन पर क्लिक करूं, सो एज यू कैन सी द बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इज 1.15. okay, so now let's try with another. I'm going to select it again, the next paragraph, click on this line spacing option, and here I'm going to choose 3.0. so as you can see, if you want to give more space between your lines, then you can use 3.0, and you can also make your space larger, like by adding space before your paragraph. Okay, so by using this option of line spacing, you can adjust the space between your lines, between your whole document. लाइक फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे पास 6 पैराग्राफ हैं, ठीक है, एज यू कैन सी। अब मैं चाह रही हूँ मेरे पास ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये फुल पेज पर अपीयर हो। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली सेलेक्ट योर होल डॉक्यूमेंट even by pressing Ctrl A. You can select your all document, click on this option of 2.0, 1.5. so in this way you can select, you can show your document in your, you can show your text in your whole document. You can also adjust the margins to make it displayed on your whole page. So this feature is very simple. What you can do, you simply just have to use this line spacing option. You just have to select your data and you have to choose your option. Like if you want to add space before paragraph, then you simply have to click on this and a space will be added to your paragraph. Okay, so now the next topic we are going to do is your document views. So here you can see that there are some views, like in which type you want to, in which variety you want to view your document. आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस व्यू ऑप्शन। आज बेसिकली हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक्स जो कि बेसिकली बहुत स्मॉल हैं और हम उनको इजीली कवर कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्यू, डॉक्यूमेंट व्यूज। हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से व्यू कर सकते हैं और अपनी फुल स्क्रीन रीडिंग या डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज हम किस तरह से इजीली देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रिंट लेआउट। So basically what is the meaning of print layout? So this view basically displays a document on your screen the way how it will display on your printed paper. Like ये जो print layout view है ये display कर रहा है आपको इस वक्त कि आपका पेपर जो है वो जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा। So this view is known as your print layout. This is selected right now, print layout. If you will move your mouse pointer here, you can see this. And now the next topic is your about document views, that is full screen reading. So what will happen in the full screen reading? So as it is obvious that with the name that full screen reading, that it will show your document in your full screen. Like if I will click on this option full screen reading, so as you can see like you can easily read out your document if you have books in your PDF, and if you will click on this option of full screen, then you can read your text or your stories easily.
it will basically adjust your text on your whole page so that you can easily read out. So this is basically the full screen reading. Now I will click on this option of close. So now the next option is basically your draft, and the next one is web layout. Okay, so now what will happen in the web layout view? So if you will click on this option of web layout, so basically web layout view display a document on your screen that it will look like how you can view it on your web browser. ठीक है, so basically हम इस view को इतना use नहीं करते. It will basically make your document like how you can view it on your web page. Now the next view is your draft view. So if you will click on this your draft view, so you can easily type your content easily, you can easily and quickly edit your whole document. So basically in this draft view, if you will insert your header and footer, you cannot see this. So here you can remove all kind of editing, and you can type and format your document very easily. So these are basically the document views, and here this one is the last view, that is outline view. So if I will click on this option, so it will give your whole document into a form of bullets, and it will display as your आउटलाइन व्यू. लाइक आप उसने हर आपके सेंटेंस को जो आपका या हर जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसको बुलेट्स फॉर्म में शो करवा दिया, सो दैट यू कैन इजीली एडजस्ट एंड व्यू इट. So these are basically the document views. Let's revise one time more. This one is the print layout view. Print layout view is basically it displays your document how it will appear on your screen when you will print your दिस डॉक्यूमेंट. प्रिंट लेआउट व्यू बेसिकली शो करता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से अपीयर होगा. व्हाट विल हैपन इन स्क्रीन रीडिंग व्यू? सो स्क्रीन रीडिंग व्यू आपका जितना भी आपका टेक्स्ट है उसको इस तरह से कन्वर्ट करता है कि आप फुल स्क्रीन उसकी इजीली रीडिंग कर सकें. सो दिस इज योर फुल स्क्रीन व्यू. लाइक अगर यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक पैराग्राफ एक पेज पर उसने कंप्लीट टेक्स्ट को डिस्प्ले किया है, सो व्हाट हैपन इट विल इन ऑन फुल स्क्रीन रीडिंग. इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट था वो उसने 3 पेजेस पर यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है. ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग में. Okay, the next one is web layout. Web layout is basically use how it will look on your web page. And the next one is outline. It will show in the form of bullets or in the form of outline your whole paragraphs. Okay, and the last one is draft. So what will happen in the draft, like if you have applied your header footer on your page, so it will not appear on here and you can easily type your document. So these are the basically document views. And now we are also going to cover a very last topic, that is basically word art. So word art basically you will find on this insert tab. You just have to click on this insert tab, and here you can see the option of word art. If you will click on this option, then you will find multiple word art list. You can choose any one of them. Like if I will type here a word of computer, simply you just have to select your word, select that word. I'm going to make it on the right alignment, on your center alignment, and then on click on this insert tab, and here word art. So basically what will happen in the word art, basically this is a style. If you will click on this, then you can make your text in the form of beautiful styles or in form of beautiful editing. So simply just have to click on this option of word art, and here you have to choose, like I'm going to click on this style, and as you can see it is automatically selected the word of computer. You can adjust the size, how much you want to display it on your document, and click on this OK. So here you can adjust your word art by maximizing or minimizing. Like you can also adjust the size.
if you want to make it look bigger. So this is basically a type of style effect which you can apply to your document. Like if you are doing your assignments, then you can type your name or anything in this form of word styles, word arts tools. And similarly, if you will click on this option of format, then and if you will click on this option of like if I will click here on this option of computer, so as you can see, an additional tab will appear on your top of your document, which the name which is format tab. So you can format it, like if you want to apply a shape color, then you can adjust the color of your text easily. Similarly, you can also adjust the shape outline. Okay, in this way you can also adjust the outline of your document. And the last one is change shape. Like you can change the shape of your word art. Like if you want to make it look in the curve form, then you can choose it this one. And if you want to choose any other like can up, or this one is the form of stop, so you can choose any one of them. So basically word art feature is used to display your text look more prominent, more beautiful, and more effective and more eye-catching. So I hope these all points are clear to everyone. You just have to do the practice of this word art. You have to apply each and every tool step by step. Like if you want to apply shadow, so simply what you have to do, you just have to click on your this text and you have to click on this option. Like as you can see, the shadow of your this word is showing in the background of your word. So in this way you can show any shadow in your document. Okay, so I hope these all points are clear to everyone. And you can also apply 3D effects on your word art tools. Like if you will click on this, then it will show your words in the form of 3D. So basically what is 3D? Where you can see your horizontal, vertical, and your above height or below height. This is basically 3D form. So let's revise one more time जो हमने आज किया है काम. So first one, that the first thing is drop cap. Drop cap basically हम क्यों यूज करते हैं? ड्रॉप कैप बेसिकली हमारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हाईलाइट कर देता है, उसको लार्जर बना देता है, so that we can grab the attention of our reader. So this is basically drop cap, and you will find the option of drop cap here on this option of third on this tab insert, and here click on this drop cap and you can choose any one of them. Okay, so this is basically drop cap. The next option, the next work we have done is your line spacing. So line spacing is basically used if you want to adjust the space between your paragraph. Like if you, as you can see, so line spacing is basically used, you can add space between your lines, your between your paragraph or between your whole document. So you will use this option of line spacing, and by default the line spacing option is 1.15. So in this way you can adjust the spacing option between your whole document. Okay, and the next one we have discussed is your document views. So what are basically document views? It will also appear on this your bottom bar, status bar. This is basically, so this is first one is print layout. Print layout is basically used how your document will be display when you will print your document. ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से डिस्प्ले होगा जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे. So this is the form of print layout. Full screen, it will show your whole text in the form of full screen reading, and you can easily adjust your, and you can easily read your whole document very easily. And the next one is web layout. What will happen with web layout is simply you can see how your document will look on your web page. The next one is outline. If you will click on this outline view, so you can see that how all the paragraph is converted into your outlines.
तो यहाँ पर आपका जो जितने भी पैराग्राफ्स है उसने उसको पॉइंट्स की फॉर्म में या आउटलाइंस की फॉर्म में या आप कह लें कि बुलेट्स की फॉर्म में उसको डिस्प्ले करवा दिया. सो दिस इज योर outline view. So you will just click on this close outline view, so it will disappear. And the next one is draft. So if you will click on this option of draft, you can easily type your document. You can easily do editing and formatting of your whole document. So if you have applied your header, footer or any other kind of styles, it will not display on this option of on this view of draft, and you can adjust is very easily. और आप इसमें किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं. And the last one we have discussed is your word art. So word art, basically here if you will click on this insert tab, then here you will find the option of word art. Okay, so it will basically a form of डेकोरेटिव टेक्स्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म का अगर डेकोरेटिव टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सो दैट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखने में अच्छा लगे या अट्रैक्टिव लगे या मोर आई कैचिंग लगे, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑफ word art. If you will click on this option, you have to simply just type the word which you want to display. Like if I will type books are good friends, like या मैं यहाँ पर सिर्फ books कर देती हूँ type, and if I will click on this OK, so as you can see it is appear here. I will just click on this, make it enter and make displaying next line. Click on this format option, and here you can choose any one of the format in which you want to display your word art. So इस तरह से आप इस ऑप्शन को इजीली यूज कर सकते हैं, और इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. सो सिंपली अब आपने आज के लेसन में करना क्या है, यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप की प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा वर्ड आर्ट हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, and how we can add spacing between your lines. And the last option is document views, और हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से व्यू कर सकते हैं. So simply just have to complete your work by watching this video, and then you have to submit your assignment on Google Classroom. And if you have any question, then you can ask me on Google Classroom or on WhatsApp.